देखिए, फ्लक्स के बारे में जो 4-5 बातें मैंने ब्रॉडली आपको समझाई थी, सबसे पहली बात ये थी कि फ्लक्स क्वालिटेटिवली क्या है। क्वालिटेटिवली फ्लक्स है हाउ मच इज द फ्लो ऑफ समथिंग ओवर एन एरिया in the direction perpendicular to area. Okay, so if something is flowing, this can be wind, this can be water, this can be electric field, anything. And now you take something, let us say you take here a sheet like this, okay, and if we put it like this, the flow which will pass through this will be maximum, and if you put like this, the flow through this will be minimum, and if you open it partially, the flow will be in between, right? तो हम कहते हैं कि मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली अगर हम देखें तो फ्लक्स क्या होता है। हमने कहा किसी भी क्लोज सरफेस पे ये E इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय A, which multiplication, scalar multiplication will give you phi sub E, right? So this is your flux, phi or phi, whatever you call it, E is electric flux, okay? ये होता है। और अगर आप A की जगह ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एरिया का है, एरिया अगर पूरा ए एक जैसा नहीं है तो आप इसको पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन टेक एलिमेंटल एरिया डी ए, आइडेंटिफाई ए नॉर्मल टू दैट, राइट, यू कॉल दैट एरिया वेक्टर एंड देन यू राइट ई डॉट डी ए इज इक्वल टू डी फाई ई, और फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल कर सकते हैं, टू गेट व्हाट, टू गेट द टोटल फ्लक्स। यू आर चूजिंग closed surface, so this symbol is for this. We are avoiding double integration because surface integral symbol is like this, but one integration with this also means surface integral for us, so let us keep it like that, right? तो ये तो फ्लक्स है। अब गाउस ने हमें फ्लक्स के लिए एक नई बात बताई। उन्होंने कहा कि जो फ्लक्स होता है E dot ds, this flux basically is equal to q in by epsilon naught. q in क्या है? The charge enclosed by any closed surface. epsilon naught क्या है? Permittivity of the free space. और जब मैंने definition आपको लिखाई थी तो उसमें categorically कहा था closed surface kept in air or vacuum. That is why epsilon sub naught, this is coming like this, right? Okay. Then जो 2-3 पॉइंट हमने समझे थे वो ये थे। मैंने कहा था आपसे कि अगर ये कोई भी सरफेस है, मान लीजिए दिस इज एनी सरफेस, 3 dimensional, you can have the coordinates associated with this. This is x, this is y, and these are z axes, right? So the flow will take place in all the directions. If you place the charge here at the central q, सेंटर में चार्ज रखेंगे आप, तो इस केस में you will have the field lines going all around. इस केस में you can directly say the flux will be equal to q, that is the charge inside, by epsilon naught. Then we said, even if you kept it anywhere, like this is my coordinate system, x, y, and z, and I keep the charge here, right? I keep the charge here. So the charge is here, the field that will, if I choose an area here like this, right? तो इसका सेंटर इधर है, right? सेंटर इधर है, तो इसका रेडियल वेक्टर ऐसे जाएगा, बट इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे जाएगी। लेकिन हमने कहा था इस केस में भी जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, that will be q in by epsilon naught. The third thing I told you is you take any surface closed, okay, of any kind, right, and you keep the charge outside, then the flux will be 0. Then I exemplified to you many ways that anything which is outside, we can't stop it from making the field. It will make the field, but it will not contribute to flux, okay? One nice way of looking at flux is through solid angle. That will open your vision a lot. Like देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, E किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए आप सोचें तो E क्या होता है by Coulomb's law, Q divided by 4 pi r square. Q divided by 4 pi epsilon naught r square, and then you have this ds term because of that Gauss, and ds by r square is somebody you know, that is solid angle. तो ये क्या हो जाएगा, q by 4 pi epsilon naught times the solid angle, d omega, right? This is the solid angle. And what is solid angle? Basically, if you think about a vertex and a cone like this, then this whole angle, now it's not 2-dimensional, it is 3-dimensional, right? Think about an ice cream cone, right? So that particular thing will be called the solid angle. You have a vertex and then you have a circumference, and in between something solid like this. So this helps you a lot in visualizing the flux, right? और अगर मैं आपसे कहूँ कि if you say
what is solid angle equal to, तो आप कहेंगे this area, if you say this is ds, तो ds by this slant length r square is this. तो ds किसके बराबर होगा? This will be equal to d omega into r square. d omega into r square, right? So अगर मैं यहाँ से कोई चार्ज रखूँ और इसके बारे में ये सॉलिड एंगल ऐसे बना दूँ मान लीजिए, तो you'll agree with me कि इसका नाम मैंने रख दिया कुछ, क्या रख दिया? d omega, right? So if I'm at this point, let me call this distance as r1, and when I'm here, let me call this distance as r2, right? So if you talk about this area and the flux here, then what you can write for this, you will say, you see, by using this analogy, if this charge is q, q divided by 4 pi epsilon naught, ds can be written as d omega into, ये जो फील्ड होती है वो होती है q by 4 pi epsilon naught, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? r1 square, ऊपर क्या आएगा? d omega r1 square, and this flux is entering inside. Same thing you tell me for this surface now which is going out. क्या इतना होगा? आप कहेंगे देखिए ये डिस्टेंस आपने आइडेंटिफाई किया है as let us say r2. This distance is r2. So what you will write for this? You will say q divided by 4 pi epsilon naught r2 square, same angle d omega into r2 square, r2 square, r2 square, r1 square, r1 square gone. You can see this term and this term are exactly identical. One is entering, one is leaving. So the flux is zero. The point that we are trying to make is any charge which is outside the closed surface will make the field. We can't stop it from making the field, but its contribution to flux will be zero. It will not be able to contribute to flux. Only the charges inside the surface contribute to electric flux. Is that okay? Right. Then the next 3 points that I made were following. We said, if you want to find flux on the whole surface, keep the charge anywhere you want. And by charge, I mean net charge. If you keep a dipole, then what is the net charge? Zero. You keep 10 dipoles on a million dipoles or 1 dipole, the flux will be zero, right? Okay, then we talked about the next thing. हमने कहा था कि total flux will be q by epsilon naught. No dispute in that. But if they want you at a part of the surface, if they want the flux, then you have to intelligently think about adding more bodies so that you can bring the charge at the center of some structure. है ना? Cube के लिए मैंने आपको समझाया था. You can think about a hemisphere and then place another hemisphere and make a closed sphere. Okay, in that case you will say hemisphere and hemisphere makes it a complete sphere. वहाँ के सेंटर में अगर चार्ज है तो टोटल कितना है? q by epsilon naught. ना भी है तो कितना है? q by epsilon naught. लेकिन अगर वो सेंटर में है तो कंट्रीब्यूशन आधा आधा आएगा. It has to do with the solid angle. The same solid angle will be made on all the surfaces provided the charge is symmetrically placed. If it is asymmetrically placed, you have to calculate the solid angle. You like it or not, you have to. But in that case, the mathematics becomes too much to do. So you get only 2 minutes to solve a problem. So if that kind of problem is asked, it's better left, right? Okay, तो यहाँ तक मैंने आपसे बात की थी. और the central एक last point जो मैंने आपको बताया था, you keep a closed surface of any shape, any size in a uniform electric field. Now what I mean by uniform, right? If I write here 3 Newton per coulomb magnitude of field, is it uniform or non-uniform? Uniform. Why? Because the field is constant. 3 will remain 3 for all times and all positions. Okay. If I write 3 I cap Newton per coulomb, you will say constant. Why? Because the direction is same, constant, x-axis, and 3 is the magnitude, is not changing. But if I write 3x I cap, you will say this is non-uniform. Why? Because it changes with position. If I write 3t square minus 2t plus 1, something like this, you will say non-uniform. Why? Because with time it is changing. This is changing with the position. Something which does not change with the position and time, we say that is a constant, right? So if the field is uniform, and electric field lines which are uniform are given by equidistant lines pointing in one direction. But if they are crowding, diverging or converging, then you know the field strength is not constant by the concept of field lines, right? ये छोटी छोटी बातें हमने last class में की थी जो उसका central idea था. I gave you a number of examples, but today I start with 2 simple examples to just highlight these things. कि देखिए बहुत हेल्प मिलती है अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होती हैं. जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला स्ट्रक्चर बना के दूं और आपको कहूं कि बताइए इसमें कितना फ्लक्स हर सरफेस पे है, या किसी एक सरफेस पे मैं पूछ लूं कि इस पे कितना है,
तो अगर आप इन बेसिक बातों का ध्यान रखें तो बहुत आसान हो जाता है काम. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट देयर इज समथिंग लाइक दिस, okay, this will go here, this will be here, this will be here. Okay, so this is a wedge kind of a thing, right? And then let us name it A, B, C, D, E, F, right? This is a wedge. And then you have some field. This field is constant, E, right? And this angle I gave you, this angle is, let us say, theta. The angle theta hai. And then we define some, let us say, ये आपको दे देते हैं कि ये length जो है वो L है. Okay, this length is, let us say, L. This length is L. And let us define this thing as B. Right. Or better, I just tell that this is B or this is L, something like this. कुछ भी, कहीं भी दे देते हैं आपको इस तरह से. Right? This is B and this is L. And then we ask you, what is the flux associated with all the 5 surfaces? There are 5 surfaces, I think you can make out. First, second, third, fourth, and fifth, right? So let us start with the simplest one first, okay? ये वाला, B, E, C, B. What is the flux? B, E, C, B. What is the flux on this surface? 0, why? This flux, this area vector will come out. The E and the area vector are perpendicular. Be happy. 0. What about that? A, D, F, A. 0. Very good. Right. Okay. दो surfaces killed. Right? इन दो के बारे में आपने बात कर ली. बाकी कौन कौन बचा? Let us see. You are left with this one. Right? This one. अच्छा, इस पे कितना होगा? What do you think will be the flux on this one? Okay, before that, I think you can tell me D, C, E, F, D. 0. Kyun? This area vector will be pointing in this direction, which is perpendicular to field. So now I am left with 2. And one is very easy, right? ये वाला. इसका area कितना है? L into B. Pointing in which direction? Parallel or anti-parallel? अरे outward normal लेना है surface पे. Anti-parallel. So the outward normal will be pointing in this direction, and that will be LB minus I cap. LB minus I cap. Now E is directed in this direction, and let us say this is I cap, because this I can take as X direction. So you can write the flux on this. इस पे flux कितना हो गया? Minus LB I into E. और I और I क्या हो जाएंगे? 1. तो minus LBE, ये हो गया flux. अब आपको एक चीज़ पता है. ये surface थोड़ा complex है, but you know the answer. Plus LBE. Why? Because any closed surface kept in uniform electric field will always give you 0. तो 3 पे पहले 0 था, 1 पे आपने निकाल लिया, और 5वें पे इसका opposite होना ही पड़ेगा, क्योंकि total 0 होना चाहिए. And if you don't believe me, we can calculate, right? Okay, let us see where the normal will go. अगर ये surface सीधा होता तो normal कैसे जाता? ऐसे. अब आपने इसको ऐसे tilt कर दिया तो normal will go in this direction now. This is the normal n cap. Okay, and this angle will be theta. How is the electric field? You will say electric field is directed in this direction, E I cap. This is directed in this direction. Okay, can you tell me the area of this? You say we can. We can tell you the area. The area will be कितना होगा? If this is B and this is theta, then what will be this equal to? Simple triangle. Okay, let us call this X for the time being. What will be X equal to? You see, B upon X will be equal to what? Will be equal to sine theta. So X will be equal to B by sine theta. This will be equal to B by sine theta. ठीक बात है, right? Okay. अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है? 90 minus theta. And what is your understanding of flux? It is E A cosine of angle between the electric field and the area vector. Okay. So what is the field? E. What is the area? You will say L into, this is B divided by sine of theta, right? This is given to you as L, so this is L into B by sine theta,
into cosine. Phi E is EA cosine theta. But theta here is what? इसके और इसके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा. सो 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा. साइन थीटा, साइन थीटा, थैंक यू वेरी मच. ELB प्लस साइन. वही आंसर जो आपने कॉमन सेंस से यहाँ निकाल लिया. तो लुक्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बट इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. क्यों? आपको बेसिक्स पता है. आपको पता है किसी भी शेप का कोई भी बॉडी अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फ्लक्स कितना होगा? 0. क्योंकि जितनी फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइन लीव भी करेंगी. ठीक बात है. अब अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 2 बार आ चुका है, राइट, और उससे पहले एक बार जेई में आया. ठीक है, तो उसके बारे में मैं बात करता हूं आपसे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में. अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा? क्या यू वांट टू राइट इट डाउन? नॉट रिक्वायर्ड, यहां लिख लो. क्या कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट? एनी क्लोज सरफेस केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज 0. ओके, 2-3-4 आसान सरफेस है उस पर निकाल लीजिए और बाकी वाले पे उसका नेगेटिव होगा अगर टोटल एक ही बचा है तो. राइट, यही कंसेप्ट था. अपने हाथ से करके देखिएगा, एक बार नहीं होगा तो आई एम हियर. राइट, ओके. दिस क्वेश्चन लाइक दिस, सपोजिंग दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है. इस बार फील्ड कुछ ऐसी है, 3x plus 2 I cap is E Newton per coulomb. Now tell me, this field is uniform or non-uniform? Non. Why? Because there's a dependent on it. Let me call this as my x-axis, this is y-axis, and this is z-axis, right? और वो आपसे कहते हैं कि you have a cube placed, जिसकी हर साइड कितनी है? लेट अस से हर साइड है 2. तो यहां पर एक क्यूब ऐसे रखा हुआ है. A cube is placed here. Each side of the cube is 2. Okay, and this end of the cube is, let us say, at a distance 2, and each side of this they have said is 2, 2, and 2. Okay, meter. And they want the total flux associated with this, and they want the charge enclosed by this. It is the 4th time I am telling this is something very very important. अगर मान लीजिए ये फील्ड 3x नहीं होती, कुछ 3 + 2 यानी कि 5i होती, तो आंसर पूरी क्लास को पता था. क्या था? 0. क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी शेप रखो क्या हो जाता है? 0. राइट. हाउ मेनी सरफेसेस कैन यू विजुअलाइज हियर? 6. तो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? पहले क्वेश्चन समझिए फिर डिस्कशन लेते हैं. एक क्यूब है जिसकी हर साइड कितनी है? 2 है. अब 2 की जगह 4 हो सकती है, A हो सकती है, B हो सकती है, वी डोंट केयर अबाउट दैट. तो हर साइड 2 है और 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन इसका फ्रंट फेस रखा हुआ है. राइट, तो ये 2 पे है तो ये कितने पे होगा? 4 पे. तो ये कितने पे होगा? नेचुरली 4 पे. और ये कितने पे है? 2 पे. और ये इसका ओरिजिनल सिस्टम का वो 0 है. राइट, वो कहते हैं इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बताएं और इसमें कितना चार्ज एनक्लोज है ये बताएं. तो हम कहेंगे ठीक है, तो पहले 4 आप बताएं. इस पे फ्लक्स कितना? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? x में. तो उसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा? ऊपर. वी आर वेरी हैप्पी. 0. इस पे 0. वेरी गुड. सामने वाले पे और पीछे वाले पे बचे कौन? 2. चलो इस पे बताओ जल्दी से मुझे. पहले बताओ इसका एरिया कितना? 4. एरिया 4 है. एरिया वेक्टर क्या है? -4i, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा? ऐसे. तो कितना हो गया? -4i. -4i. अब जब यहां x आप डालेंगे तो इस वे x कितना है? 2. तो E एट द सरफेस कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 3 × 2 6. 6 + 2 8. तो 8i cap. So what is the flux on this surface? You will say flux on this surface, let us say A B C D. A B C D पे जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? -4 and 8. How much? -32. -32 I cap become 1. Right? Okay. Let us focus now on this particular thing, SPLM. Okay? Right. First thing, tell me what is the field here?
4 into 3, 14, 14 plus 4 into 3, 12, 12 plus 2, 14. So the field here is 14 I cap in this direction, right? What is the area of this surface? 4. In which direction? So this will be 4 I cap. So what will be the flux associated with this? 4 into 14. कितना हो गया? 56. I cap and I cap will become 1. Appropriate unit जो भी होगी, right? ये हो गया flux on this surface, that is SPLM whatever. Okay. ये हो गया इस पे flux, ये हो गया इस पे flux, ये इस पे flux, right? तो बताएं net flux कितना? बड़ा कौन है? 56 बड़ा है या ये वाला surface का flux बड़ा है? 32. तो कितना हो गया? 56 minus 32 in this direction. कितना हो गया ये? 24. This is 24 unit. This is the flux associated with the whole cube. Now Gauss tells me that the flux associated is equal to Qin by epsilon naught. Qin by epsilon naught. So Qin is equal to flux, that is 24 into epsilon naught, that you know 8.85 into 10 to the power minus 12 with proper unit, whatever it is. Please be careful about unit. I have taken everything in meter. If this is centimeter, then you have to appropriately do everything in centimeter, right? So this is the charge that is enclosed by this surface. और होना भी चाहिए. क्यों? आप देख रहे हैं फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है. अगर फील्ड चेंज हो रही है तो यहाँ से यहाँ तक जीरो चार्ज का स्पेस नहीं हो सकता है. यहाँ कोई चार्ज हैं जो क्या कर रहे हैं? फील्ड को बढ़ा रहे हैं, right? They are adding to the field. So this is the way to look at this particular thing. Okay? तो ऐसे करना होता है. आपके NCERT में भी एक सॉल्व एग्जाम्पल ऐसा है जिसके बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं. मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया है, मॉडिफाई किया है. नाउ दिस कैन वेरी वेल बी स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ भी हो. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फ्लक्स एसोसिएटेड जीरो नहीं होता है, यूनिफॉर्म फील्ड में फ्लक्स एसोसिएटेड जीरो होता है. सिंपल. ओके. एक आखिरी बात जो मैं चाहता हूँ आप समझ लें, वो मैथमेटिक्स आगे भी काम आने वाली बात है कि देखिए कोई भी जो मान लीजिए ये एक स्फीयर है, राइट? ये इसके सेंटर में हमने क्या किया? एक कोई चार्ज रखा. और फिर हम अगर आपसे पूछ लें कि व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कोन, ये बॉटम के साथ, तो आप एक बात याद रखें, अपनी कॉपी में एज अ फॉर्मूला याद रखें कि अगर हमें कोई देगा कि ये वाली लेंथ जो है ये इसकी रेडियस है r, ये एंगल अगर मैं आपसे कहूँ कि हाफ वर्टेक्स एंगल थीटा है, तो याद रखिए कि एरिया, ये जो एरिया होता है इधर, area associated with the base of the cone, that is given as 2 pi r square 1 minus cos theta. Okay, अब अगर सॉलिड एंगल की बात करता है आपसे, तो सॉलिड एंगल कितना होता है इस पर्टिकुलर केस में? देखिए आपको मालूम है कि टोटल सॉलिड एंगल लिखने के लिए आप क्या करते हैं? एरिया इनटू सॉलिड एंगल खुद क्या है? सॉलिड एंगल इज ds अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू सॉलिड एंगल. सो इसको अगर आप r स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं r स्क्वायर से, तो सॉलिड एंगल एसोसिएटेड विद दिस कोन विल बी 2 pi 1 minus cos theta. दिस इज द सॉलिड एंगल. अब आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं. अगर ये थीटा जीरो हो, अगर ये थीटा जीरो हो तो cos जीरो कितना होगा? 1. 1 minus 1 कितना होगा? 0. तो एरिया भी 0. मान लीजिए कि ये थीटा यहां तक हो 90, cos 90 कितना होता है? 0. 1 into 2 pi r square. In that case, what would become? This will become a hemisphere, right? And if I take a complete sphere, आपको मालूम है, this theta will become 180. Cos 180 कितना होता है? -1. Minus minus plus 2 into 2 pi r square कितना हो गया? 4 pi r square, right? So this is it. है ना? प्रूफ अगर आप करना चाहें तो एलिमेंट लेके फिर एरिया लिख के फिर एलिमेंटल एरिया से लिख सकते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट